Like, hello everyone. Today UPSC preliminary result was out, and congratulations to those who have made it and going to write mains this year. And my heart goes out to those people who may be feeling that they've reached the rock bottom. I say every time, I know how it feels to not make it besides our best attempt. But believe me, every experience creates an opportunity for us to learn, to understand what more can be done. So I have received a request from two of you. Now, when I say two of you, it means my viewers who write to me or students who attend my uh, courses and write to me. And based on that, I've understood that some of you are curious about the topic climate justice. So I'm going to take that topic up in this video. And I'm making this video really late at night because this seemed to be the most curious topic. So I felt like not wasting any much more time in inaction and presenting before you the topic that has kept you curious. Do you see the passage here? I'm using set B. So in front of you is question number 3 from set B. And this is question number 43 from set A. I loved this email from one of the participants. Hello, ma'am, I saw your CSAT reading comprehension video on YouTube. I wanted you to please take a look at question number 43, climate justice passage. Option A, climate justice to be ingrained in detail. Option, I feel this could be the answer. If detailed word is not there, she feels that it could be. If detailed word is not there, as it is taken from the passage, The Way Forward from Paris, and how nice of her to have attached the Indian Express article from which the passage was extracted. Really helps me as a facilitator to facilitate the sessions better when students participate and allow me the opportunity to discuss details while supporting the argument with the right kind of abstract or article. This is my email address where you can write to me if you have more details of the question that you want me to discuss. 1984 pronunciation at gmail.com. If it is difficult, let me know. I'll give you a more simplified one. Today, I also want to tell you that happiness is a mood. This is a quotation that I'm sharing with you. Positivity is a mindset. So maybe today you're feeling like you've hit the rock bottom and not too good. Those of you who are, please understand, don't limit your potential with what others perceive of you or others expect from you, or you expect from your own performance. Focus on direction, not outcome. So if you focus on direction, not outcome, your path will be lit up with positive action points. Please believe in the process. I repeat again, like I always say, that your long-term goal is to live a meaningful life or to serve society. And what is your short-term goal? Your short-term goal, which is a milestone goal, is to crack this exam. And another milestone within the range of this big milestone, which is to crack this exam, is to crack CSAT paper, to achieve that qualifying score. And to achieve that, you can have process goals. Step by step,
inch meal techniques. Little by little, you progress towards that goal. And when I say little by little, it doesn't mean that it'll take you years, many attempts. It just means every day, take one step in that direction. So those who are asking me these questions, I feel they are very much on the right track. As much as I'm grateful for their queries, I am proud of them that they're taking the right step. They're not just sitting back, laid back, passive. This is the passage. And here you see, along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental balance. Please have a look at it if you haven't seen this passage before. Those who have can review the passage once. Yeah, I also have the Hindi passage in front of me. पर्यावरण विषयक शब्दावली में धारणीय जीवन शैलियों और साथ साथ जलवायु न्याय को महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में माना जाता है. So viewers, if you want me to make one video in Hindi language using the reference point as the Hindi translation of it, let me know. अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी के पैसेज को आपके सामने पेश करूं जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है तो मुझे बताइए, मैं वैसा करूंगी. In the interest of time and knowing that it's already 12 o'clock, another day has started for me, I should help you go over this passage a little quickly. अगर आपको और वक्त देना है इस पैसेज को और कुछ समझना है तो मुझे बताइएगा. यूजुअली मैं अपनी क्लासेस में थीम्स को इकट्ठा करती हूँ जो पहले भी आए हैं और आपको दिखाती हूँ कैसे एक हमें डायरेक्शन मिलती है सोचने का, एक एप्टीट्यूड हम बना सकते हैं जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़कर, और जो पैसेजेस हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट और थीम्स पे आते हैं यूजुअली, उनका क्या पैटर्न है, वो किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहे हैं. सो when you attend regular classes with me, you become more aware of those concepts that are again and again asked. You become more aware of the direction of the statement and question, where would it lead to ultimately. So let's read this passage out loud. Along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. Environmental vocabulary जो है उसमें हम climate justice को एक significant principle के रूप में देखते हैं. और क्या लिखा है? Both the principles have bearings on political and economic choices of the nation. और both the principles क्या sustainable lifestyles और climate justice, ये हो गए both. आप हमेशा सेकंड लाइन को पढ़ते वक्त कोई डिटरमिनेंट्स हो जैसे द हो गया, बोथ हो गया, तो तुरंत अपने दिमाग में कनेक्ट करें डॉट, कौन से दो, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स और क्लाइमेट जस्टिस इज रिगार्डेड एज significant principle. Yeah, let me just check once if the screen is getting recorded. It is. Okay, great. So both the principles have bearings on political and economic choices. So here we say they have further implications on these, bearings on these. So far in our climate justice, abhi climate change summits, abhi tak ke किसी पॉइंट से शुरू हुए और अभी तक के, यानी क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू करके पेरिस क्लाइमेट, और ये जो डॉट्स है ना आपके खुद कनेक्ट होते हैं. एंड किसी और एग्जाम में आप पैसेज पे भले ही फोकस करते हैं मगर यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में आपको एक ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड चाहिए. वो ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड विदाउट प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के थोड़ा टफ है. ये टेस्ट आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है कि आप ब्यूरोक्रेसी के प्रति क्या जानकारी है आपकी ऑलरेडी रिलेटेड टू इट, वो किस तरीके से काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट है आपका, और आप कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं. बेशक आप रीड करके कम्युनिकेट करें, राइट करके कम्युनिकेट करें या एक्सप्रेस करके आप बोल कर कम्युनिकेट करें. तो एप्टीट्यूड एक अपॉर्चुनिटी होती है
जो पैनलिस्ट है या जो भी एग्जामिनर्स हैं या जो भी पेपर सेटर हैं, ये उनकी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जाने कौन से जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो कौन से लेवल पे हैं, उनका एप्टीट्यूड क्या है। इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगी, व्हाई द पेपर हैज दिस फॉर्मेट, व्हाई सच पैसेजेस आर आस्क्ड एंड व्हाई सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड in some other video or on another platform. फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम पैसेजेस को ही पढ़कर जवाब देना है, ये लिटरल जो सेंस है पैसेजेस को, ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक नैरो व्यू हो जाएगा अगर हम ये माइंडसेट से चलेंगे। बट मैं इट वाज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड एंड रेलेवेंट आल्सो। तो इस पेपर में आपको अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करना, इट्स अ टूल दैट यू कैन यूज। इसीलिए जो लोग बहुत समय से प्रिपेयर करते आए हैं उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बेटर होती है, बिकॉज वो कनेक्ट डॉट्स को बहुत जल्दी कर पाते हैं। सो जो बिगेनर्स हैं उनके पास भी एक मेथड होना चाहिए कि उस स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे अचीव करें। या फिर जो हिंदी मीडियम से हैं या फिर जिन्होंने पैसेजेस पहले कभी इतने प्रैक्टिस नहीं किए, उनको एक मेथड के साथ चलना चाहिए कि वो लेवल कैसे अचीव करें। वो किया जा सकता है, इट्स प्रीटी मच डूएबल। अच्छा, फिलहाल वापस आइए पैसेज में, passage discussion में, along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as significant principle. Significant एक आपको टोन मिल गया, यही फर्स्ट लाइन से जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैसेज को करते वक्त ध्यान में रखने का। यू हैव टू पे अटेंशन द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन एंड वर्ड्स लाइक मॉडिफाई, सिग्निफिकेंट, principle. Both the principles have bearings on political and economic choices. So far in a climate change summits or compacts, both the principles have eluded, पछते रहे हैं, they have eluded consensus, यानी they have not been able to achieve consensus. ये एक प्रॉब्लम है जिसे ऑथर आपको अक्नॉलेज करने के लिए कह रहा है। एंड दिस line or the statement being centered in the passage gives you an idea that if the problem is here and if you acknowledge the problem, you have to think of the solution. And now onwards, perhaps the passage will be a build-up of what should be the solution. यहाँ से देखिए, justice to elaborate. This is your problem, which is here. So far, both the principles have eluded consensus. और ये जो स्टेटमेंट है ये आंसर बना है प्रीवियसली भी और यूपीएससी प्रीवियस ईयर पैसेजेस का। सो इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करते रहना प्रीवियस ईयर्स की, और इंपॉर्टेंट है पैटर्न ऑब्जर्व करना। फिर इंपॉर्टेंट है कि हम लोकेशन पैसेज की देखें एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन में क्या आता है तुरंत प्रॉब्लम के बाद जस्टिस, यानी सोल्यूशन यहां से शुरू होगा, बट सोल्यूशन ले करने के लिए एक बैकग्राउंड ले करना होगा। देखिए कैसे ले हो रहा है। जस्टिस इन द जुडिशियल सेंस इज वेल डिफाइंड, जुडिशियल सेंस में तो वेल डिफाइंड है, तो कहां नहीं है, दिस शुड बी इन योर हेड। इफ इट इज डिफाइंड हियर then where it is not. However, then the indicator itself says pay attention, the author's writing style, note that. However, in the context of climate change, it has scientific as well as socio-political connotations. So it has more scope of being defined. In other words, or the crucial question, again, another important indicator, in the next few years will be how resources, technologies, and regulations are used to support the victims of climate change. In other words, to support climate justice, which is from the फर्स्ट लाइन। जैसे इकोनॉमिक जस्टिस होता है वैसे क्लाइमेट जस्टिस होता है, और क्लाइमेट जस्टिस की आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ये यही है कि इन विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, क्या फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए जो विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जो माइग्रेंट्स क्रिएट होंगे क्लाइमेट चेंज के, उनको सपोर्ट करने के लिए। ये इसमें जो आपके पास द क्रूशियल क्वेश्चन आ गया, ये वाली जो सारी बातें हैं ये क्लाइमेट जस्टिस में शामिल हैं। And then towards the end, the last line says, justice in climate is not confined to actions relating to mitigation, removal, but includes what more is required, what more is included, the wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damage. So if you look
at the questions, the question, the options, the questions, and you understand that there is a very valid option which can also be an answer. There is an impending issue, impending yani very important issue that has to be covered ASAP. The crucial question, the impending issue, the crucial question in the next few years, in other words, the impending issue of dealing with a huge number of climate change victims, climate refugees. This option is wonderful option to choose from the given options. But what limits this option is the scope, which is limited to climate change victims, climate refugees. And the last line says what? But includes, it is not limited to mitigation removal. Here, when it says the crucial question is this, the passage further brings in an additional emphasis on justice again in climate justice. Climate justice addresses victims of climate change as well as requires more attention. What is more to be done in the context of climate justice? Actions related to mitigation plus wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damage. Meaning all these along with option C. So we were to look for that kind of option. And when we looked at option A, it became a little clearer to us. Climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate change compacts or agreements. That option C can be seen as a part of option A because it covers more range from the last line, from the first line, and also option C in itself. So I'll come back to it. The question that has been asked in this email, I'll come back to it. First, let's rule out B and C quickly. Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. ये केवल एक fact है ना? और सवाल क्या पूछा गया? Best reflects the most logical, rational, not emotional, rational, and important message conveyed by the passage. तो ये एक supporting factor दिखाई दे सकता है हमें, are unevenly distributed and exploited across the globe. Further, ये किसी और passage या article का part हो सकता है जहां हम बात करें पेरिस क्लाइमेट पॉलिसी की, जिसमें बात होती है कि हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स मिटिगेशन या अडेप्टेशन प्लान, और हर एक कंट्री को अपनी कैपेसिटी के अनुसार, दैट इज व्हाई अनइवनली। ये इस पैसेज का फोकल पॉइंट नहीं है, क्रूशियल मैसेज नहीं है, सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है मगर मोस्ट क्रूशियल पॉइंट नहीं है। ये वाला पॉइंट क्यों आपने एलिमिनेट किया ऑप्शन डी वाला? Climate change in all its considerations is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. ये आप देखो तो ये आप क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेट कर सकते हो जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज को बताया गया कि ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। हाँ, तो ये यहाँ पे इतना डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की अभी बातें तो नहीं हो रही हैं, आपकी समझ है, आपका प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज है। और जब आप बोलते हैं कि पैसेज की तरफ ध्यान होना देना जरूरी, जैसे पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा सवाल, मैम पैसेज पे फोकस करना चाहिए, जनरल नॉलेज काम नहीं आती। जनरल नॉलेज जो आपकी है वो कनेक्ट करने में काम आती है कि ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से ले सकते हैं और ये किसका हो सकता है, और ये बहुत फास्ट एक ऑटोमेटिक स्केल पर आप प्रोसेस कर पाते हैं जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं पैसेजेस को करने की। मतलब आप खाली कैजुअली नहीं ले सकते अभी आप सीसैट को, ये तो हमें समझ ही आ रहा है ईयर बाय ईयर जैसे सीसैट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, पैसेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो जनरल नॉलेज ने यहाँ आपको ये सिखा दिया होगा कि ये इस पैसेज से रिलेटेड नहीं है, इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से इतना रिलेटेड नहीं है, क्योटो पेरिस पीस एंड क्योटो प्रोटोकॉल वाली बातें नहीं हुई हैं। अगर आप ये ना भी देखें तब भी आप समझ लेते हैं सपोर्टिंग फैक्टर इस पैसेज के लिए। ये वाला जो है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा करती हैं, ये सच्ची बात है, मगर इस पैसेज के लिए ये बात इतनी जरूरी नहीं कि जितना ए एंड सी। अब दोबारा से आते हैं,
climate justice should be ingrained in detail in the rules of all climate agreements. ये हम ले सकते हैं नहीं. किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि मैम यहाँ पे लिखा है all the new climate compacts. अभी न्यू की बात करते हैं. यहाँ पर जब हमारे पास आ रहा है so far ऊपर पैसेज में, so far आप देख लेंगे. तो so far अगर यहाँ दिखाया गया है both the principles have eluded consensus among nations, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए अभी तक जो भी चर्चाएं डिस्कशंस हो चुकी हैं so far whatever has been discussed in different policies, Kyoto Protocol or Paris climate, I'm forgetting the name of that policy, I'll just bring it up with you. So far what has been discussed, that automatically gives an impression that what more can be done in the new policies, because policies also keep changing. Do we just follow one set rule always? No, we have to be dynamic in our approach. Climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compacts and agreements. और इसमें अगर हम देखें, climate justice should be ingrained, should become a fundamental part of the essence of in detail in the rules of all the new climate compacts. तो ये कहना डिफिकल्ट तो नहीं होगा, ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट तो नहीं होगा. क्यों डिफिकल्ट नहीं होगा? ऑल द न्यू क्लाइमेट चेंज का एसेंस ही तो बना रहे हैं, फंडामेंटली तो बना रहे हैं. ये थोड़ी ना कि एक पर्टिकुलर वे में क्लाइमेट जस्टिस का जो फॉर्मेट है वही हर जगह अप्लाई होगा. सो जब हम एक्सट्रीम ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम एक्सट्रीम ऑप्शंस, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स में ये देखते हैं ऑल द न्यू क्लाइमेट में क्या होना चाहिए, द स्कोप ऑफ क्लाइमेट जस्टिस. ये फ्लेक्सिबल है. क्लाइमेट जस्टिस जो अडेप्टेशन हो या जो मिटिगेशन रूल्स हो या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ये ओपन स्कोप है. यहाँ पे ये स्कोप कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि निश्चित ही डेवलप्ड कंट्रीज को करना होगा या उनको ज्यादा करना होगा. सो अगर यहाँ एक सिंगल टाइप ऑफ रूल क्लाइमेट जस्टिस का नहीं डिफाइंड है तो ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन ऑप्शन. और सभी न्यू पॉलिसीज में इसका शामिल होना इसलिए जरूरी है. अगर आपने पहले कभी इन आर्टिकल्स को पढ़ा है तो आपको वहां से एक डायरेक्शन मिलता है कि अभी तक ये उनका फंडामेंटल पार्ट नहीं रहा है कि माइग्रेंट्स के लिए क्या किया जाए, कि अडेप्टेशंस के रूल कैसे डिफाइन कीजिए. सारी चीजें जो क्लाइमेट जस्टिस में आती हैं वो स्कोप अभी तक शायद उतना इलेबोरेटली डिस्कस नहीं किया गया है. हाँ, लीडर्स का भी स्टैंड बदलता रहता है. सो इस वजह से ये ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन बनाता है. और अगर आप बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंपली सी और ए को दोबारा दोबारा देखिए और ये देखें कि सी नैरो कर देता है खाली क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स पर इस ऑप्शन के आंसर की पॉसिबिलिटी. और यहाँ पर जहाँ क्रूशियल क्वेश्चन कहा गया, सी जो ऑप्शन आपको दिखाई दिया, इसके बाद भी और बातें की गई. तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन और ये वाला जो ऑप्शन सी है, ये टुगेदर मिलाकर क्या ऑप्शन ए हमें बता सकते हैं. आपको जब आप दोबारा से रिफ्लेक्ट करेंगे शायद आपको लगेगा ये एक वैलिड पॉइंट है. अभी एक और आर्टिकल शेयर करेंगे एंड आई एम थैंकफुल to the student who has shared this with me article. It is always very delightful to see people taking part the right way, with the right approach, because it shows me that they're on the right track. They're actually taking part in the process of finding out how to do passage. I'm kind of finding the passage that or the article that I want to share with you. Just give me time with that. Okay, this one. All right, the main article, source of this. Can you see the source of this? And इसमें क्या लिखा है? The way forward from Paris. यानी उसके बाद अभी आगे क्या होगा? पेरिस तो हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद climate justice must be ingrained in the rules of the new climate compacts. यही आपका ऑप्शन है. Climate justice must be ingrained in the rules of the new climate compacts. और जिसने मुझसे सवाल पूछा, very bright, intelligent candidate, बहुत अच्छा आपने लिखा भी है अपनी explanation को. I believe your answer writing skills are also good, as much as your analytical skills are wonderful. Climate justice must be ingrained in the rules of the new climate compacts. अब यहाँ पे कौन सा वर्ड नहीं है आपके पास जिसको देखकर आपको लगा ये थोड़ा एक्सट्रीम ऑप्शन है? जिनको भी लगा ऑल वर्ड नहीं है, ठीक है. तो जब आप कोर्स अटेंड करते हैं जिसमें हम एक मेथड ओरिएंटेड अप्रोच
यूज करते हैं, उसमें हम बात करते हैं एडवर्ब्स की, जैसे ऑल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, एवरी हो गया। जब आपके पास कोई एडवर्ब नहीं होता एक स्टेटमेंट में, एब्सेंस ऑफ an adverb is also an indicator of the presence of the word all or every. Climate justice must be ingrained in all the rules of the new climate compacts. It doesn't say which rule. Hence, it can say, in other words, all the rules. जैसे मैं अगर अब कहूँ कि every student is curious, और या फिर मैं कहूँ students are curious, या फिर मैं कहूँ the students are really curious and all the students are really curious. यहाँ पे ये सारी statements का आप पेन लेकर बैठा करिए जब when you watch my video if required, और वो लिखिए statement, या पॉज कीजिए, दोबारा से चाहिए लिखिए, नहीं क्लियर होता कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं to clarify it for you. But when I conduct a course which is oriented with a method and the right kind of direction, allow me to make some slips, allow me to make some mistakes. I am somewhere in the midnight hour making this video for those who want more clarity on this. So, because I was almost half asleep, but then I felt some force within me, felt okay, by now 2 people have asked me, so it becomes important for me to come up with some explanation. अब देखिए, ये इसके सब टाइटल की हेडिंग है। तो एक और मैं आपसे एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ें तो उनका सब टाइटल्स भी पढ़ें और समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं आपको बता रही हूँ, एडवर्ब का यूज कैसे देखना है, तो सब टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, अगर आपने ये पैसेज पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़ा होगा, with India and other major growing economies ratifying का क्या मतलब है? ratify word का, हाँ, the Paris Climate Change Agreement. Okay, Kyoto Protocol and ये आगे word आपका Paris Climate Change Agreement. The threshold for the agreement to come into force has been reached. अच्छा, जो participant या जो viewer अभी रुक जाना चाहेंगे वो रुक सकते हैं. You can watch the video a little later, and जो आगे बढ़ना चाहेंगे वो वीडियो को आगे देख सकते हैं. कुछ लोगों को डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो आप प्लेबैक स्पीड भी अपनी अडॉप्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से फास्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड होके यूजिंग द बैकवर्ड स्लैश या जो भी आप करते हैं, आप दोबारा से देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. हाँ, there is a general sense of relief that the agreement will not be hobbled from its inception like its predecessor, जो पहले आया था, the Kyoto Protocol. Okay, with India and other major growing economies ratifying the Paris Climate Agreement to come into force has been reached, there's a general sense of relief that the agreement will not be hobbled from, walked away from. The meaning of the word hobble, what is it? Like its predecessor, the Kyoto Protocol. What remains to be seen, however, is if the same enthusiasm fires actions directed at climate justice. The idea of climate justice was agreed to politically at Paris, but it remained unresolved operationally. Abhi tak unresolved, resolution ki zarurat hai along with sustainable lifestyles. Yahan aa gaya aapka passage. Climate justice is regarded as significant principle. Ye pura passage hai aapka yahan par, haan. Or yeah, I'm a subscriber already, so it should ideally show me. I need to stop it and open it again. Okay, allow me a second. And meanwhile, you can go back to the same passage, or if you have any question that are coming to mind right now, you can bring them for me. You can ask those questions in the comment box if required. All right, I'll take you back to this article. I have it with me now. Okay, here we go. So, yeah, here, okay. Your passage, right. Those adverts are part of this paper, so we must respect their adverts also. This is how they make business, and they educate us with the help of the support that they get from that business. So we must respect that. Okay, who have been the most ardent advocates in the past? Compensation for damage. However, this approach fails to distinguish between the historical and current responsibility for climate change.
In its least confrontational connotation, the notion of climate justice is equivalent to the principle of equity. Demand for equity, nations not call for inaction. I'm taking you through this article real fast right now. It is argued that Paris' constant willingness of all governments to contribute to addressing climate change is an indication of the fact that reform has been sung. क्या मतलब है reform कहाँ? Note this word down. Nothing can be farther from the truth. Common but differentiated responsibility की बात की जा रही है. Nothing can be farther from the truth. यानी ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है कि differentiated responsibility को इतना ध्यान की प्रति इतना ध्यान दिया गया है. While it's certain that the principle of historical responsibility, the centerpiece of the Kyoto Protocol, is no longer the only basis of actions, firewall between developed and developing countries, kya sach hai? Future actions will continue to be different amongst countries and driven by their capability and sustainable development goals. Paris Agreement affords flexibility to each country. What Paris Agreement did not do, and rightly so, is to lay down a metric by which the respective capabilities of countries could be defined. Defined nahi kiya gaya. While it may be normal to treat responsibility for climate change as universal because of the policies of economic growth, it's abnormal to define a metric for capability when the environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. ये भी आपका एक था ना सपोर्टिंग फैक्टर जिससे हमने कहा था बी को रूल आउट किया था वो भी यहाँ दिखाई दिया आपको. जस्टिस इन द जुडिशियल सेंस ये आपका दोबारा से आ गया वेल डिफाइंड. देखिए जो आर्टिकल्स भी होते हैं न्यूज़पेपर में वो भी टाइपिंग एरर कहते हैं, ठीक है. तो वो भी मिस्टेक्स करते हैं, आपको भी मिस्टेक्स करने की इजाजत है. अगर पेपर नहीं क्लियर हुआ है तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपके सामने कुछ असंभव हुआ है या आपके साथ कुछ निराला हुआ है. और अगर हुआ भी है तो हर एक टेस्ट एक जर्नी है, इस जर्नी से आप सीखते हैं कुछ. द क्रूशल, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, आई एम श्योर आप भी सीखते हो. और अगर आप मेरे व्यूअर्स या ऑडियंस या पार्टिसिपेंट्स इन माय क्लासरूम फैसिलिटेशन सेशंस हैं तो आप जरूर सीखते हैं. जैसे मैं सीखती, मुझे लगता है कंपनी का असर पढ़ना चाहिए. The crucial question in the next few years will therefore be how this happened. Paris में हुआ, India is committed to reduce its emissions intensity, while making a declaration of climate justice. Group of think tanks, justice and climate is therefore not confined to action related to this part of your, The evolving negotiations of the Paris are based on a hope that notion gathers momentum and gets described in rules. So, इन सभी चीजों को पढ़कर आपको एक इंडिकेशन मिला. वो क्या इंडिकेशन मिला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबटाइटल्स को पढ़ना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में और ये समझना कि एक्सट्रीम ऑप्शन को कैसे एक्सट्रीम ना डिक्लेयर किया जाए, उसको देखने का क्या नजरिया होता है, क्या एप्लीट्यूड होता है. ये स्कोप की बात कर रहे हैं. हाँ, सभी नए रूल्स क्लाइमेट कॉम्पैक्ट में अगर स्कोप शामिल हुआ तो ये एक अच्छी बात है. एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं होगा, एक्सट्रीम ऑप्शन हो जाता है जो लिमिट कर देता है इसको, और ये तो अच्छी बात है. हाँ, तो क्लाइमेट जस्टिस को सभी में शामिल किया जाए तो एक्सट्रीम ऑप्शन भी एक्सट्रीमिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा. वुड यू एग्री टू दैट थॉट? हाँ. Now, I'd like to also share with you a few words and vocab-based items. Allow me to find and open that part so that I can share with you. मेरी निगाहें जब स्क्रीन में इधर-उधर जा रही होती हैं, वो यही होता है that I'm usually navigating through multiple screens that are open on my windows so that I can put in the best way that is possible for me. And let me check if it was there yet or not. I need to do one more thing. Okay, तब तक आप लोग मुझे बताएं कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या डिफरेंस है. Tell me about it. You can. Okay. I'd like to hear from you. क्या फर्क है पेरिस climate change and इस वगैरह में एंड क्योटो प्रोटोकॉल में, और जो मैंने वर्ड्स आपके साथ कुछ डिस्कस किए उसमें क्या फर्क है? हाँ, ओके पीपल, yeah, that's the channel.
Ratify. Okay, here's the difference. The Kyoto Protocol required only developed countries to reduce emissions, while the Paris Agreement recognized that the climate change is a shared problem and called on all countries to set emissions targets as per their capability. क्या चीज जो नहीं हुई वो आपने अभी इंडियन एक्सप्रेस के उस आर्टिकल में पढ़ा? डिफाइन नहीं हुआ है क्लियरली. हाँ, अब एक पार्ट नहीं बना है हर एक पॉलिसी का क्लियरली. Ratify का मतलब make an agreement officially acceptable by voting for or signing it. Hobble का मतलब walk with difficulty because your feet or legs are hurt. Elude का मतलब क्या होता है? To manage to avoid being caught. You can pause the video, know these words if you'd like to. And ingrained का मतलब होता है become a fundamental part of something, forming a part of the essence. Huh? So, yeah. And I'm not using any AC or fan right now to give you a better audio quality, but I'm not using a mic either. So let me know if what you hear while watching this video is clearer to you already. All right, guys, requiem का मतलब क्या होता है? Yeah. So note down words if you have more time. अगर आप एक beginner level पे हैं, why not? I'll help you. So there is this thing, the inner reality creates the outer form. Live in the experience of constant awareness. Look within yourself before any career projections or before being defined by others. Look within yourself and find your own truth, your own reality. So, आज हमने review किया climate justice वाला passage और आज test का result जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, it is important to feel grateful that you have the opportunity to write this exam. And if you want some method to do it, you can start with maintaining, let's say, a gratitude journal. Every day, write 3 things you're grateful for. Use the power of gratitude. If you feel grateful for things that you have in your life, like the opportunity to write this exam, बहुत सारे लोगों को तो इस एग्जाम के बारे में अभी तक मालूम नहीं. आपको मालूम है, आप privileged हैं. आप ऑनर कीजिए इस प्रिविलेज को. आप ग्रेटफुल होइए इस अपॉर्चुनिटी के प्रति. ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको रिवॉर्ड करेगी लॉन्ग टर्म में. सो ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए आज से पॉजिटिव महसूस करने के लिए. जैसे मैं कह रही हूँ, हैप्पीनेस इज अ मूड, पॉजिटिविटी इज अ माइंडसेट. वो माइंडसेट को हम कैसे लेकर आ सकते हैं? बाय क्रिएटिंग अ जर्नल. उस जर्नल में कुछ भी 3 पॉइंट्स में लिखिए. आई एम ग्रेटफुल that I have resources to write this paper. I'm grateful that my parents support me. I'm grateful that I've got the right kind of mentors to guide me through the process. So हर एक दिन एक नया पेज लिखिए जिसमें आप लिखें कि आप कोई भी 3 नई चीजों के प्रति जो ग्रेटफुल महसूस करते हैं. और आप देखिएगा रिवर्स मतलब आपको यूनिवर्स उस ग्रैटिट्यूड की बधाइयां भी देंगी एंड रिवॉर्ड भी करेगी. सो इफ यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, द यूनिवर्स फील्स हैप्पी टू गिव यू मोर. सो और हैप्पीनेस के लिए आई ईट फॉक्स नट्स. हाँ, मखाना क्या बोलते हैं इसे? I always miss that word, but tell me, what are these fox nuts? Similarly, you can maintain a gratitude journal. और जिनको शौक है और भी स्टेशनरी यूज करने का, इसमें वो कुछ अच्छा लिखे, आई एम ग्रेटफुल फॉर, और उसको इसमें डाल दें. जिनको सिंपल रहने का शौक है, बड़ी अच्छी बात है, कंज्यूमरिज्म ओरिएंटेड सोसाइटी ना हो तो अच्छा है, वो अपने छोटा स्लिप बनाए, इसे छोटा, ताकि आप 30 days या फिर पूरे यूपीएससी के प्रोसेस के दौरान जो भी आप ग्रैटिट्यूड का नोट देखें इसमें डालें. जब भी मायूस हो तो इसे खोल के पढ़ें. आपको पता चलेगा कि लाइफ में आप हर दिन किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं. और जब आप शुक्रगुजार होना शुरू करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, you'll start feeling positive, you'll start feeling happy, you'll start feeling thankful, grateful. ये जो प्रोसेस है ये हर किसी को नसीब नहीं होता. 5 लाख कैंडिडेट्स
ये एग्जाम शायद लिखते हैं, और कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश की। सो अगर एग्जाम टफ हो रहा है, व्हेन, क्या है वो फ्रेज, व्हेन टफ गेट्स द गोइंग, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, tough gets the going, huh? Please help me correct that. So mistakes or failures, ये तो part and parcel है हमारी journey का, as being alive on this earth. So मुझे लिखिए, आपको कौन से parts अच्छे लगे इस videos के, क्या मैंने बताया उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नया आपने सीखा, और मैं आपको और कैसे बेहतर सपोर्ट कर सकती हूँ, और क्या मैं आपके लिए कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों ने जब मुझसे पूछा कि आप ये बनाइए, मुझे एक मोटिवेशन तो उसमें था, इतनी रात को जाकर मैं भी और भी काम करती हूँ। And I'm really grateful that I have work that can help me make time to support people who are preparing for this examination. And this examination is close to my heart because I've also prepared for it. I've benefited from people around me. So why would I not uh, use any chance to benefit those who I can? And जब students वो एग्जाम क्लियर करते हैं या किसी भी लैंग्वेज के लेवल पर आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि that's part of my achievement. So thank you everybody for watching the video. Let me know which parts you like. Let me know if I can keep it shorter for you. And it's up to you to choose to watch it until the length it satisfies you. I will say, make your own exclusive approach and use the best price around here. So all the best. Take care. Sleep well, rest well. Think of a new day, new possibilities.